हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 27 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। इससे पहले हमने इसकी डिक्टेशन करी थी मॉर्निंग में। आई होप कि आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, कॉमा, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर को एक ही साथ लिखेंगे। ये हमने पिछली ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा हमने इस तरीके से, वाइस चेयरमैन सर, फिर इसके बाद कॉमा लगा लेंगे। एट द वेरी आउटसेट, इस तरीके से कर लेंगे, कॉमा। आई कैन नॉट हेल्प पॉइंटिंग आउट को भी पूरा एक ही साथ लिख लेंगे इस तरीके से, पॉइंटिंग आउट दैट वीट प्रोक्योरमेंट, वीट को इस तरीके से लिखेंगे, वीट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीका यह लिखने का और एक तरीका यह लिखने का। डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप कंप्लीट वे में भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हैज बीन मार्क्ड बाय अ, हैज बीन मार्क्ड बाय अ स्टॉप गो एक ही साथ लिख लेंगे इकट्ठा इस तरीके से, स्टॉप गो एटीट्यूड बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंटल इस तरीके से लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, और गवर्नमेंटल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ट्रेड एफर्ट फुल स्टॉप। ऑलमोस्ट ओवरनाइट डिसीजन ओवरनाइट decision was taken at the AICC session held in Bombay, that government should take over the procurement and distribution of wheat through state agencies. Full stop. I am aware that even earlier, I am aware इकट्ठा लिख लेंगे, that even earlier the party in power was wedded to this ideology, to this एक साथ लिख लेंगे, ideology इस तरीके से लिख लेंगे, ideology इस तरीके से, full stop. My point is that the decision was arrived at without adequate homework, full stop. It is one thing to formulate resolutions and another to implement them, full stop. Next, a political party इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, political party can easily indulge in the pastime of drawing up इस तरीके से, drawing up एक साथ भी लिख सकते हैं हम, resolutions
resolutions than for any government to implement the resolutions into effective action full stop. Our prime minister, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, took a hard decision to modify this policy so that the government could procure, एक साथ लिख लेंगे, could procure को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, enough wheat for distribution and take care that for distribution, अच्छे से बनाएंगे distribution को हम, for distribution and take care that the vulnerable sections, vulnerable इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम vulnerable इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sections of the people are served fully इस तरीके से through procurement efforts on the part of state agencies and the private traders को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, traders full stop paragraph change. Next para है however anyone following the development, इस तरीके से लिखेंगे हम, development को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, readily knew that quite few state governments, इस तरीके से लिखेंगे हम शॉर्ट में, state governments इस तरीके से भी लिख सकते हैं, either did not understand the intent इस तरीके से behind इस तरीके से the new policy or were unwilling to make, एक ही साथ लिख लेंगे, it a success for reason of their own एक साथ इस तरीके से लिखेंगे और separate of their own इस तरीके से full stop. in fact एक साथ इस तरीके से और in fact को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और in fact को इस तरीके से लिख सकते हैं. The policy was implemented by Punjab and Haryana इस तरीके से full stop. The home state of the prime minister, मैं इस तरीके से बनाऊंगा, prime minister has hardly helped the distribution system full stop paragraph change. Next para में चलेंगे friends हम. Next para है while saying this I should like to add that while saying this I should like to add that the traders overpitched the claim to procure wheat full stop. I can understand एक साथ भी लिख सकते हैं हम और I can understand इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Governmental machinery making wrong estimates about the wheat crop को हम above the line लिखेंगे, first place power crop, and the procurement policy but it is extraordinary that the traders should have made
traders should have made such a grievous error, full stop. Possibly, comma, the traders thought it politics to exaggerate इस तरीके से their capacity so that it might be acceptable to the authorities on the one hand, and also persuade the farmer इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, to part with their stocks on the other comma, once a psychology of plenty was created, full stop. The farmer in India is no less a businessman than a trader, full stop. He assessed the situation and sat on the stocks for larger gains, full stop, close. So friends, ये थी शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 27. आई होप कि आपको इस ट्रांसक्रिप्शन समझ आई होगी. इसमें हमने डिफरेंट जो फ्रेजेस हैं या डिफरेंट वर्ड्स की जो डिफरेंट तरीके से आउटलाइंस बनती हैं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, ये हमने इसमें सीखी हैं. आई होप कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और ये प्रैक्टिस ज़रूर करना क्योंकि ये स्पीड बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी. कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.